So see this problem. This problem came in GATE exam, GATE EC exam. Okay, not physics, GATE EC exam on node analysis. So this is plus minus. We have one resistance is given B. There is one resistance. So this resistance value is 2 ohm. Voltage is 1 volt. Okay, this is also 2 ohm. We have one more resistance of 1 ohm, and a current source is also connected of 3 ampere. Okay, say this terminal is A and this terminal is B. Okay, so they're asking find VAB, find the voltage between A and B, V and VAB. Okay, so say here, so suppose this is ground. Okay, so this is the voltage of this point A. Here in between this will be VAB. Okay, so say this is VAB. Okay, it's point A. Now apply KCL. Okay, so we can see here, if this is a node, okay, I can make one current here. Okay, this current is already coming towards node. So say this is outgoing current. Okay, you can choose anything. Okay, outgoing, incoming, and anything. Okay, so now I'm taking outgoing current as a negative and incoming current as a positive. Okay, or you can write outgoing current equal to incoming currents. Okay, so outgoing current will be, this is VAB, this is 1. So I can write VAB minus 1. Okay, this is the voltage difference divided by resistance. Okay, this will be my 2 ohm, this current. Okay, this, so say this is I1. Okay, so you can write this is I1, this is I2, and this is I3. So I can write I1 outgoing, okay, I3 outgoing equal to I2, and I2 is 3 ampere already given. So this is outgoing current, this is also outgoing current. So I can write VAB, okay, minus 0 divided by 2. So this is outgoing current, and incoming current is only 1, 3 ampere is given. So you can solve it. This kitna aega value? So this will give you VAB, 4 volts. VAB minus 1 plus VAB equal to 6, and this will become 2 VAB equal to 7. So VAB value will come 7/2. 3.5 volt. ठीक है, सबका आ रहा है ये? Yes, sir. Okay, so this question was asked in GATE EC exam. Only they asked what is the voltage between A and B. So I'm not solving further. Okay, so we'll solve one more problem. So you can see this is our reference node. Okay, and this is non-reference node. 3.5 volt. अगर लिखा नहीं है तो मिटाने से पहले बोल दिया करो, ठीक है? So now we'll solve one more problem. So far we are solving only circuits where the one variable voltage, one node voltage is variable. Now we'll see if there are two variable voltages. Okay, two nodes are variable voltage. So this is 5 ampere current is coming here. Okay, now he says find V1 and V2. Okay, so we have to solve for
V1 and V2. So as you can see, at V1, okay, resistance value is here 2 ohm, and here resistance is given 6 ohm. Okay, this is I3 5 ampere, and this is 4 ohm, and 10 ampere current is given. Okay. So now we have to solve it. Okay. So this is V1, this is V2. So now we have to write two equations. Okay. For node V1, we write separate equation, and node V2, we write separate equation, and then we'll solve both these equations. Okay. So I'm writing Sir? for Sir, your screen is blur. थोड़ा blur है sir. अभी brightness. बट सर मैनेजेबल है सर, कोई दिक्कत नहीं सर. ओके एक्चुअली आज तो मैंने तो डार्क थोड़ी भी की, डार्क भी हो रही थी स्क्रीन. तो लाइट अच्छा जस्ट गिव मी 1 मिनट. यस सर. अभी ठीक है. यस सर. Okay. So now we'll solve for V1. Okay. So say this is current is I1, this current is I2. Okay. And this current is I3. Okay. Say this is I4. And say this is I5. So we write first for V1. So there are three currents. Okay. So I1 is incoming. Okay. I2 and I3 are outgoing. So I can write I1, okay, equal to I2 plus I3. Okay. So now what is the value of I1? I1 की value कितना है? 5 एम्पियर. 5 ampere. Okay, very good. So I1 is already given 5 ampere. I2 will be, this is grounded. Okay. V1 upon 2. Okay. And I3. So this is V1, V2. Okay. So V1 minus V2 by 4. 4 MP. 4. Okay, 4. Okay. So now you can take, you can solve this one further. So this will give you 2V1 plus V1 minus V2 equal to 20. Okay. So the equation is coming now 3V1, okay, minus V2 equal to 20. Now this is the one equation number 1. Now we will solve it for node 2, V2. Okay. So V2 में कितनी करंट आ रही है? So this is outgoing. This is outgoing. Okay. This incoming and this incoming. 4 currents. Okay. So current is coming. I3 is coming. Okay. So I1, so I3 is incoming. Okay. Plus I5 is also incoming. I4 is outgoing. And 5 ampere. This is I1 is outgoing. Correct है? बीजे करंट जा रहा है यहाँ से. Okay. Yes sir. Okay. So now you can write I3. I3 कितना है? Again V1 minus V2 divided by 4. I5 is 10 already given. Okay. I4 is V2 by 6 and I1 is 5. Okay, 5. So I can solve it. V1 minus V2 divided by 4 minus V2 by 6. Okay, and this will give me minus 5. So if you solve, if you multiply by 12, okay, so this will give me 3V1 minus 3V2 minus 2V2 minus 60. So 3V1 minus 5V2 equal to minus 60. Say this is equation 2. Sir, sir. I3 plus I5 equals to I4 plus I1. I didn't get it. So I3, okay, I3 is incoming current.
Okay, and this I5 is also incoming current. These two currents are coming towards node. Okay, and this I1 and this I4, they are outgoing. The sum of the total current should be 0. That means incoming current equal to outgoing current. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. भी ये करंट बाहर जा रहा है I4, यहाँ से ये I1 जा रहा है बाहर, इस नोड से बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, तो जो अंदर आ रहा है उतना ही तो बाहर जाएगा. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस KCL. ओके, तो यहाँ पे किया था वही किया यहाँ पर भी. I1 आ रहा है इधर, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, सो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3. इसको ऐसा एरो लगा लो, समझ में नहीं आ रहा है तो ये ठीक है. जो करंट यहाँ जा रहा है वो यहीं से जा रहा है. Now you have two equations. Okay, Sir, calculation. so then 3v1 minus 5v2 equal to minus 60. Okay, so क्या करें, इसको कैंसिल सब्सट्रैक्ट कर दो, सॉल्व कर दो, माइनस कर दो. ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस. ओके, दिस बिकम 4v2 equal to 80. So V2 will give you 20 volts. Okay, अब V1 कितना आएगा? So V2 20 यहाँ पे रख दो. 3 आ रहा है, 40/3 आ रहा है. 40/3 आ रहा है, सही है. 40/3. Okay, that means 13.33 volts. So answer correct. So these are the node analysis with two equations. Okay, with two nodes. Now we'll do last problem. Put the heading now super node. Okay, super node क्या होता है? अगर दो टर्मिनल्स के बीच में दो नॉन रेफरेंस, V1 is non-reference, this is non-reference, this is reference. Okay, this is ground. So when there is a voltage source between two non-ground nodes or non-reference node. Okay, in that condition, how we will solve the circuit? So इसको मिटा दूं मैं? Can I rub this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we are solving the last problem now on node analysis. So we have a circuit. This is 2 ampere. Source is given. Okay. And there we have one more resistance. Here we have battery minus plus of 2 volts. Okay. And then here we have one current source of 7 milliampere. Okay. And here we have one more resistance. So this is 2 ohm, 4 ohm. Okay. And then we have one more minus plus 2 volts, and we have one more resistance here of 10 ohm. Okay, so question is clear now? निकालना क्या है? हाँ, निकालना क्या है इसके अंदर? We want to find, say this is V1 and this is V2. So now we want to find what is value of V1 and V2. Okay, now for we have two unknowns. Okay, so two unknowns means we need two equations, but since there is a voltage between these two nodes. Okay, so we cannot solve this question by a usual method. If you want to solve node analysis, we have to make it as a super node. Okay, super node क्या होता है? Super node मतलब this is super node. What is super node? Super node means now these two nodes combined together will be taken as a single node. Okay, तो अब जो यहाँ पे जो एरिया है, ये जगह है, हम मानेंगे कि इसके बीच में ये बैटरी है ही नहीं.
when we apply KCL, okay, we'll consider these 2 points are shorted. Shorted है मतलब ये बीच में नहीं है. That means ये क्या है, एक combined point है. This is single point. That's why we call it a super node. बाकी जो KCL लगाना है वो सेम मेथड है. तो सपोज एक करंट यहाँ से आ रहा है, ये पूरा एक नोड है. एक करंट ये आ रहा है, एक 1 करंट 2 करंट 3 करंट 4. Now total 4 currents. एक करंट यहाँ पे 5 6. Now here you can see जो करंट यहाँ से जाएगा, okay, same current will come back here. या फिर यहाँ से जो जाएगा वो वापस यहाँ से आएगा. ओके, सेम करंट है. तो ये एक अब ये सिंगल ये दोनों मिलके एक ही नोड है. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जो आउटगोइंग है वही इनकमिंग है. ओके, सपोज दिस इज IX. आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं. ये कैंसिल हो जाएगा. ये IX है तो IX जा रहा है तो IX ही आएगा. ओके, नाउ से दिस इज I1, say this is I2, say this is I3, say this is I4. Okay, yes, this is also outgoing. Now you can write the KCL equations. Okay, so this is incoming current. Okay, this is incoming. So I1 is incoming. और कौन सा आ रहा है? I1 is incoming. और क्या आ रहा है इस पूरे नोड पे? और कौन सी करंट आ रही है? सर I1 ही इनकमिंग है और ये IX I1 ही सिर्फ हाँ सर वो भी है लेकिन ये- वो तो कैंसिल हो जा रहा है सर IX कैंसिल हो जाएगा. लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ तुमको समझाने के लिए. तो ये क्या इनकमिंग है IX. ओके, तो ये इनकमिंग्स है IX. ओके, आउटगोइंग कौन सा है? सर आउटगोइंग है I2 I3 I4 I2. I2 I3 So V1 upon 2. Okay, I3 V2 upon 4 and this is 7 milliampere I4. Okay, shall I write I1 I2 first? Okay, so this is IX. So outgoing is I2. Okay, I3 and I4 plus ये IX भी outgoing है. Okay, तो ये IX से कैंसिल हो जाएगा. तो इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है. ओके, कैंसिल हो गया. सो नाउ I1. ओके, सो I1 is 2 equal to I2. I2 is V1 by 2. I3 is V2 by 4 and I4 is 7. So now you can solve it. You can make equation. So if you solve this one, okay. सर हाँ, सर सिंपली सर सर यहाँ पे इसका मतलब 10 ओम रेजिस्टेंस नहीं है, उसको हटा दिए तो सिंपली शॉर्ट सर्किट हो गया ना. एक ही ये- पोटेंशियल हो गया, V1 V2 इक्वल हो गया. कैसे? किसको हटा दिया? 2 वोल्ट बैटरी हटा दिए सर. हाँ, इसका मतलब V1 V2 इक्वल हो गया ना, मतलब एक ही हम पोटेंशियल इसको हटा दे रहे हैं. मतलब हम इसको अब इसको हम जब सॉल्व करने के लिए हम इसको सिंगल नोड मान रहे हैं. सर. हाँ, फिर इतना करने की क्या जरूरत है जब सिंगल नोड मान नहीं रहे हैं. तो सॉल्व करने की टेक्निक है. वोल्टेज V1 V2 अलग लगाएगा. देयर डिफरेंस इज देयर. V2 minus V1 is we are making two equations. Okay, V2 minus V1 2 volts is given. Now because of two Yes, sir. variables, we want one more equations. So now we are considering in order to allow, because we already know what is V2 minus V1. Now we are considering this is a single node to apply KCL. Okay, so that we'll get two equation and this is a technique to solve. When there is a voltage, हाँ this सर. is method to solve. हाँ सर हम लोग को एक ही पॉइंट से 10 ओम वाले रेजिस्टेंस वाले जुड़े हुए हैं तो वो तो ऐसे हट जाएगा ना सॉल्व करते वक्त. तो उसको क्यों हम सॉल्व कर रहे हैं? कौन सा वाला? 10 ओम रेजिस्टेंस. तो दिखाया ना मैंने, ये सॉल्व करके बताया ना. आई साइज कट गया ना. अब वो उसका सर्किट पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, पर लिखना तो पड़ेगा ही सॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो हाँ सर एक लास्ट क्वेश्चन सर. हाँ, सर हमको पता कैसे चलेगा कि सुपर नोड टेक्निक हम लोग को यूज करना है? वही तो बोल रहा हूँ. जब दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में बैटरी आ जाए, यस सर. तब आपको उसको सुपर नोड मानना पड़ेगा एक इक्वेशन बनाने के लिए. ठीक है. जी और सर. ये टेक्निक और V2 minus V1 ऑलरेडी गिवन 2 volts. दो इक्वेशन हो गई. सॉल्व करना है, V1 V2 आ जाएगा. यस सर. ओके. और सर ग्राउंड इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है ना. ग्राउंड लास्ट टाइम जैसे हम अज्यूम किए वैसे ही ग्राउंड अज्यूम ग्राउंड करना है वैसे ना. अज्यूम करना है, दोनों वैसे ग्राउंड वैसे अज्यूम करना है, बस सेम चीज है.
ठीक है, ये उल्टा आसान है। सर इसमें एक इक्वेशन तो डायरेक्टली मिल जा रहा है आपको, खाली आपको एक ही इक्वेशन लिखनी है, दो भी नहीं लिखनी है। यस सर सुपर नोड कैसे पता लगेगा, एक बार फिर से बता दो। सुपर नोड पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो ये नोड है, यह नोड है, ये रेफरेंस नोड है कि नॉन रेफरेंस नोड है। ओके, so this is because we are assuming this is ground, so this is now our non-reference node. This is also non-reference node. So whenever there is a battery between two non-reference nodes, okay, whenever there is a battery, voltage source, not current source, current source तो कहीं भी हो सकता है, whenever there is a voltage source between two non-reference nodes, okay, that time we have to consider this as a super node. Is it clear? ये याद रख लो ना, नॉन रेफरेंस सर, नोड है वो non-ref- V1 V2 वाली है या दूसरी? ये नॉन रेफरेंस नोड है ना। नॉन रेफरेंस का मतलब हमको ये रेफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू इसका वोल्टेज कितना कैलकुलेट करना है। रेफरेंस का मतलब ग्राउंड। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज voltage source between two non-reference nodes, okay, that will be considered as equal to super node. Clear? So जब homework देंगे then you try, okay, and see it with the answers. Sir, one more question, sir. one question, sir. हाँ बोलो। सर ये दोनों नॉन रेफरेंस वोल्टेज के बीच में पावर सोर्स अगर एक करंट सोर्स भी होता तो डिवीजन कैसे होता करंट का? एक करंट सोर्स तो अगर दोनों होते तो अलग चीज है। अगर करंट सोर्स होता, ठीक है, देन यू टू हाँ करंट सोर्स भी होता अगर, अब वो ऐसे अज्यूमिंग कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा वो देखना पड़ेगा, कैसे 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 करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक बस है, एक करंट सोर्स लगा सकते हैं वहां पे बस यहाँ पे करंट सोर्स लगा दें। यस सर, ओके, यस सर। देन आई डोंट नो, दो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स कैसे लगा, एक साथ इकट्ठा कैसे लगा दोगे यहाँ पर? ओके, that kind of Sir, question we cannot ask. Okay, कि यहाँ पे हाँ केवीएल केसीएल लगाने हर एक लूप के लिए एक सिंपल को ऐसे क्वेश्चन होगा, उसके लिए एक टेक्निक है। ये स्पेशली इसको ऐसे क्वेश्चन के लिए है जहां पे दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में ओके बैटरी आ जाए। Especially this type of question, these are for there are special techniques. Okay, super node, super mesh technique. So they are special questions. Okay, so generally we don't use in our syllabus these are questions, but because of completeness, because these network analysis in the syllabus of engineering students, okay, we don't get questions, many questions on network analysis, but because there is a technique, that's why I'm discussing. Okay, because there are something if this is there, okay, there is a different technique to solve. We cannot use the same way what we are doing earlier. Is it clear now? Yes sir. So जब ये So one more दो नॉन रेफरेंस doubt, के बीच sir. में बैटरी है, then you have to consider that is a super node and a single node. Sir, हाँ. can you once more explain what is a non-reference and reference node? नॉन रेफरेंस का मतलब है जहां पर हम वोल्ट भी, रेफरेंस का मतलब है ग्राउंड, out of Okay, sir. we have to consider one node as a ground, okay, and with respect to And that is those known as- ground we have to calculate these voltages. Okay, Okay. so these are non reference nodes जहां तो पे sir, जो this- वेरिएबल हाँ तो जो ग्राउंड है वो रेफरेंस नोड होगा और जो ऊपर हम्म। में है वो नॉन रेफरेंस वो होगा। नॉन रेफरेंस नोड होगा, बस यही तो है अच्छा अच्छा। सर। ऑलवेज ओके सर। रेफरेंस इज ग्राउंड okay, in principle you can take any voltage as a reference. Okay, so now solid distance how much is coming, so multiply by this 4, this become 8. Okay, 2v1 plus v2 plus 7 so सर हाँ
7 की जगह तो 7 की 28 नहीं होगा सर? कितना आएगा 28. हाँ Okay. यस सर, उधर जाके -20. So 2v1 plus v2. Okay. कितना आएगा अभी? इक्वल्स टू -20. -20. Okay. -20. And this is v2 minus v1 is given 2 volts. Okay. So if you can see this one minus plus, and this is your circuit. Here is a v1, here is a v2. Okay. And this is the ground. Okay. So you can apply KCL. Okay. So this plus, this is minus, this is plus, this is minus. Okay. So this is minus v1. Okay. And this is 2 volts. So this is -2, and now plus minus plus v2 equals to 0. That means v2 minus v1 is equal to 2 volts. Okay. So now you have v2, okay, plus minus v1 equal to 2 volts. Now you can solve it equation. How much? What the answer is coming? V1 equal to -22 upon 3 volt and V2 equal to -16 upon 3 volt. So v1 कितना आ रहा है? Sir, -22 upon 3 volt. 22 upon 3. Okay. That means Yes. 7.33. So this Yes, is sir. correct. Okay. And v2? V2 आ रहा है -16 upon 3, 5.33, -5.33. -5.33. Okay. Yes. So answer सही है. ठीक है. So this was node analysis. Okay. So अगर ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि कंपलसरी करना ही है, बिकॉज कंप्लीटनेस के लिए मैंने करा दिया. ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हमारे सिलेबस में, बट आई थॉट without completing, because it is in their syllabus, it is a book, so when it is there something new I should explain. Okay. भाई हमारे क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन का फर्क यूज होगा नहीं. हमको खाली चाहिए नोड एनालिसिस. when we'll use that will when we use op-amp and we'll use transistor, that time we'll use. Okay. तो हमको ये कभी काम नहीं आएगा. Is it clear? Yes, sir. Okay. But that if you solve, that will give you, if some students later they want to appear in gate EC, okay, or they want to command on network analysis. Okay. That's why I'm considering solving this problem here. Okay. Now second day, now node analysis completed. Now you have to solve mesh analysis. Okay. So write one problem. Plus minus ohm is 5 ampere. Okay. Now in mesh analysis, what we do? Okay. In mesh analysis, instead of calculating voltages here, we calculated mesh current. Okay. So you already know what is mesh. Mesh क्या होता है? What is mesh? Is a loop which is not inside which there is no another loop. Okay. So here we have two meshes. So say the mesh current is I1 and this mesh current is I2. Okay. Now find I1 and I2. Solve it. So we'll take mesh 1. Okay. First, let's say this is 1, this is 2. Okay. So mesh 1. Okay. So mesh 1. Now we can apply KCL. This will become -10. Okay. This will become plus minus 4 I1. Now what is the current here? यहाँ पे कितना current होगा? I1 minus I2. I1 minus Okay. I2. So 6 I1 minus I2, okay, equals to 0. So this become 10 I1, okay, minus 6
I2, okay, 6I2 equal to is 10. equal to 10. Okay, this become 5I1 minus 3I2 equal to 5. Now write in second. So this is now I2. Okay. So what is the value of I2? Sir, 5 ampere. I2 5 already ampere. already given minus 5 ampere. I2 is minus 5 ampere. minus 5 ampere. So no need to solve this one. Okay. So I2 will be minus 5 milliampere. Okay. Now you can solve. What is the value of I1? Minus 2 ampere. So I1 is Minus 2 ampere. minus 2 ampere. Okay. What Let is me the check. direction of current 5 ampere? Check answer. Yeah, correct. हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर 5 एम्पियर जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसमें? ऊपर की तरफ है ना, ये एरो लगा हुआ ऊपर की तरफ. हाँ, और सर लेकिन जो हमने I2 लिया है वो तो राइट हैंड साइड जा रहा है ना. हाँ, तो ये I2 ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है. That's why I take I2 equal to minus 5 ampere, not plus ampere. ठीक है सर, ठीक है. Okay. ओके, थैंक यू. That's सर हाँ सर वन क्वेश्चन सर. सर अगर मैंने जो I2 है, जो लूप है मेश 2, उसमें I2 minus 5 एम्पियर 3 ओम रजिस्टर के थ्रू ले लिया होता, तब भी मुझे 0 ही मिलता आंसर. सॉरी, I2 की वैल्यू -5 ही मिलती यहाँ पर. यस सर. सर जो मेश 2 है ना, मेश 2 जिसमें हाँ, तो I2 यहाँ पे रखो ना, वही तो रख रहे हैं यहाँ पर. यस सर. वही तो यहीं पे वापस यहाँ रखो, यहाँ पर बात तो एक ही है. जी सर, राइट. ठीक है. यस सर. So this is mesh analysis. सर मेश में से जो करंट है ना, उसके आपने जो डायरेक्शन ली है I1 I2, वो आर्बिटरी कुछ भी लिया हुए चलती है? नहीं, दोनों जो भी लेना, दोनों में सेम लेना है. If you are taking counter clockwise, both should be clockwise. If you are taking counter clockwise, both should be counter clockwise. That's it. इतना ध्यान रखना है. Okay, but can be counter clockwise or clockwise, both are okay. हाँ, both okay, but both should be same. इस मैच में क्लॉकवाइज इधर भी क्लॉकवाइज होगा, इधर काउंटर क्लॉकवाइज इधर भी काउंटर क्लॉकवाइज होगा, दोनों मैच में. ऐसा नहीं कि एक में ऐसा एक में उल्टा, ऐसा नहीं चलेगा. ओके, फाइन, थैंक यू सर. So one more problem you can solve on mesh analysis, then we can finish this mesh analysis and we can start network theorems. Okay, so is plus minus 15 volt. ओके, सॉल्व इट. कितना आ रहा है? नीचे का वोल्टेज क्या है? This is 5 volts. Okay, 15 volts. This is 10 volts. So we can write now equation. Okay, here say this is I1. Okay, this is I2. So you have to find I1 and I1 and I2. Okay, so I can apply KV here, minus 15. Okay, then 5 I1. Okay, and this here will be I1 minus I2. So 10 I1 minus I2. Okay, this become 10 0. Okay, so 5 I1. Okay, this is 5 plus 10, 15 I1 minus 10 I2. Okay, and this is equal to minus 15 10, so this will be 5. This become 3 I1 2 I2 equal to 1. Okay,
So this is for from mesh 1. Okay. Mesh 2, you can write -10. Okay. And this is again now I2 minus I1. Okay. 10 I2 minus 10 I1. Okay. And this is 6 plus 4, 10 I2. 10 I2 equals to 0. This give me 20 I2. Okay. 10 I1 equal to 10. So this become 2 I2 minus I1 equal to 1. Okay, solve करो कितना आ रहा है? Sir, I1 minus half, I2 1/4. Check it again. Okay. So if I solve this one, okay, 3I1 minus 2I2 equals to 1. Okay. So if you जो उसको प्लस कर देंगे तो ये बचेगा 2 and 2. Okay, so I1 is की वैल्यू 1 आ रहा है और I2 कितना आ रहा है? So I1 is 1. Okay, so you can put here 1. So 3. 1 ampere. 3 Sir, half. I2 also 1 ampere, sir. I2 also 1 ampere. Okay, I2 1 ampere ही आ रहेगा. Okay. Yes, sir. 1 half. So now starting network theorem, we'll start now superposition theorem. सर हेलो सर. हाँ, एक मिनट बोलिए. सर सेकेंड लूप में जब केवीएल लगाएं तो -10 वोल्ट उसके बाद जब 10 ओम वाले में लिखे I2 सिर्फ I2 करंट ही है 10 वोल्ट 10 एम्पियर वाले में 10 ओम में 10 I ये है ना I1 आ रहा है I2 जा रहा है तो 10 I2 minus 10 I1. ओके सर नीचे लिख दिए. ओके ओके. Now superposition. So superposition theorem means we have to take one source at a time. Okay, so suppose a problem is given. This is 90 volts. Okay, so this is 6 ohm. This is 10 ohm. This is 15. Okay, this is plus minus 40 volts. Okay, this is 5 ohm and here is 4 ohm. Okay, so in superposition theorem says, okay, so suppose I want to calculate current here in this 6 ohm resistance. Okay, so if you want to calculate using superposition theorem, so superposition theorem is used when there are multiple sources. Okay, एक से ज़्यादा sources है, जैसे यहाँ पे 2 sources हैं, 3 हो सकते हैं, एक voltage source हो, एक current source हो. So we'll take one source at a time. जैसे आप लोग Coulomb's law लगाते हैं, okay, कोई charge है, उसके आसपास बहुत सारे charge पड़े हुए हैं. This Q0 test charge is there, Q1 is, Q2 is there, Q2 is, Q3 is there. So sum of the total force is equal to force due to each charge. Okay, so similarly here we want to use superposition theorem. That means we will use one source at a time. Okay, so जब एक source लेंगे, other source will be deactivated or turned off. Okay, now what is the meaning of deactivation? Okay, so deactivation of source. So deactivation source means if there is a voltage source, okay, make it short circuit. Okay, that means voltage source, okay, should be short circuited. Okay, deactivation का मतलब क्या है? Okay, this is number 1. Number 2, if there is a current source,
current source will be replaced by open source. Okay, so current source, okay, अगर वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और करंट सोर्स है सो दैट विल बी ओपन से. ओके, मतलब हमको बाकी सोर्स को टर्न ऑफ करना है. तो करंट कब टर्न ऑफ होगा? जब सर्किट को ओपन कर देंगे. और वोल्टेज कब जीरो हो जाएगा? जब उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे. ओके, सो नाउ we have to calculate current in this 6 ohm resistance. Okay, so what we'll do, we'll take case 1. Okay, we'll calculate voltage due to 90 volts. Okay, so say voltage due to 90 volt is I90. Okay, so total current I want to find what is the current I here, and say the current due to 40 volt is I40. Okay, in this 6 ohm. Now I have to calculate I90 and I40. Okay, so case 1, so I am taking the first aspect of this source, so I will make this as a short circuit. Okay, so this is short circuit. Okay, now बताओ I कितना आएगा? What is the value of I? So due to 90 volt, 5.4 ampere. 5.4. See, this is 15 and 5, 20. Okay, so this become 20 and this 20 is parallel with 10. Okay, so कितना हो जाएगा? 20 parallel to 10. So this become 20 into 10 upon 30. Okay, so this become how much? 20 by 3. So this become, the total become 20 by 3, and this 20 by 3 is series with 6 ohm, 20 by 3 and 4 ohm. Okay, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 प्लस 20 by 3 प्लस 4. कितना हो गया? 50 by 3. 50 by 18 3. Okay, 50 by 3. अब कितना करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा I90. I90 is equal to 90 upon 50 into 3. So ये हो गया 27 upon 5, that is 5.4 ampere. Okay, so this is due to this source. Okay, अब यहाँ पर पहले क्या था? 40 सोर्स था, 40 वोल्ट्स था. Okay, now we have to calculate the current due to this 40 volt here. Okay, so this will be short circuited. 8 by 5. Okay, अब कैलकुलेटर कितना आएगा? 1.6 ampere. Case 2, very good. बड़ा फास्ट हो. कौन है ये? Case 2. Okay, so case 2. Okay, so now these two are in series 10. Okay, it's 10 and 10 parallel to 10. Okay, so this become 100 upon 25. Okay, this 5, now 15, 5 and 5. बाकी लोग को समझ में आ रहा है ना कैसे करेंगे? Yes, sir. हाँ, so ये हो गया 15, 5, 5. टोटल हो गया R कितना हो गया? 20, 25. Okay, now current I, now current, this current, total current I, how much will be there? So I will be there 40 by 25. Okay, 1.6. so this is 1.6 ampere. Okay, now we want current in 6 ohm. Okay, 0.8. so ये 10 ohm है. Okay, now voltage current division here, you have to apply current division here. So this is my 10 ohm, this is also 10 ohm. दोनों पैरेलल में बराबर हैं, तो हाफ ऑफ करंट डिवाइड हो जाएगी. ओके, यू कैन अप्लाई करंट डिवीजन आल्सो. So this is 10 ohm, 10 ohm. So there, so I40 will be 0.8 ampere. Okay, but the direction is opposite to this one. Okay, so I90 is your left and your I40 is your right. हाँ. So 0.8 कैसे हुआ सर? So now current is 1.6 ampere. Okay, yes, so 1.6 ampere current is coming here. Okay, okay. Yes, sir.
now, so you're gonna apply Sir. current division. Okay, so say Okay. this is 10 ohm. Okay, this is Okay, 10 ohm. Okay, and this is here. सर वो करंट डिवीजन लॉ लगाएं पहले वाला सर। हाँ, हो जाएगा ना? ठीक है ठीक है, हाँ सर ठीक है, सर चलो। बता हाँ, so this is 10 ohm. Okay, across there is a 10 ohm resistance here. Okay, and this is 15. This is 15 ohm. This is the 40. Okay, and there is a 5 ohm resistance. Okay, यही है ना? Yes, sir. Yes, So sir. this is 5 ohm resistance. Okay, now here total current is coming here. Okay, this one, this current is coming here 1.6 milliampere. Okay, so I want current in this one. तो जो इन दोनों में जाएगी 10 में जाएगी वो इसी में जाएगी. Okay, so what is the current here? Okay, so current here means I want current, total current is 1.6. Okay, 1.6 and सामने वाला सामने लेंगे 10. Okay, divide by total 20. Okay, so this become 0.1 ampere. So now current हो जाएगा I, this is 5.4 minus 0.8, हो जाएगा 4.6 ampere. 6 ampere. Okay, so this is your superposition. Now I want you to solve this circuit by मैश एनालिसिस. ओके, तो उसमें क्या तुम्हारा आंसर चेक हो जाएगा ना? अभी तुम लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो, पता ना सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे सर. तो अभी इस क्वेश्चन को आपको मैश एनालिसिस से करना है, सेम क्वेश्चन को, एंड यू फाइंड सीट whether you're getting same answer or not in this current. Okay, so this is your homework. Do it by mesh analysis. Okay, so I'm Yes, sir. concluding the class today here. Sir. Okay? हाँ. Sir, ये 1.6 into 10/20 means what is this, sir? Yesterday we had discussed, you are not in the class, how current divides into resistances. Oh, resistance. Current division, parallel resistances. parallel Okay, sir. resistances. Okay, sir. So if I Okay, current is sir. coming, okay, so this will divide. If they are equal, okay, R1, R2. Okay, if I want current in I2, R2. Okay, so say it is IR1. that's it. Okay, IR1. if you're not done, you can revise. The video is there on YouTube. Okay. सर I90 और I40 जो यहाँ लिखा हुआ है ना, वो I90 मतलब ये जो पहला मेश है उसमें से पास होने वाला करंट है या पहला जो I90 क्या है, 90 वोल्ट के कारण है. ओके, और जो I40 है वो 40 वोल्ट के कारण है 6 ओम में. So I told in the beginning, in superposition principle what we do. Okay, it's like I told you the example of charges. If there is one charge, I want total force. So I will calculate the force due to Q1. I will calculate the force due to Q2. I will calculate the force due to Q3. Okay. Similarly here, if I want to calculate the current in the circuit, okay, because of multiple sources, so what I'll do, I will once turn off one device, one source, and I will calculate only effect. I will see the effect of first source. Okay. तो मैंने इसको shut कर दिया और इसके कारण मैंने देखा कितना करंट आ रहा है इधर. ओके, देन आई हैव टर्न्ड ऑफ दिस वन एंड आई हैव कैलकुलेटेड द करंट ड्यू टू दिस वन इन दिस सर्किट. ओके, देन सुपरपोजिशन मतलब क्या है, जो इसके कारण आ रहा है और इसके कारण दोनों को ऐड करना है. ओके, लाइक ये फोर्स हियर, टोटल फोर्स. ओके, F1 plus F2 so on. So this is the superposition principle. Now superposition principle में there is a voltage source. So turning off voltage source मतलब इसको short circuit करना है. अगर यहाँ पर current source होता, if there is a current source, open circuit, then we will make it open. Open. Okay, so we'll do next class. Clear. Some other examples of. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.